Stimulus discrimination. Dear students, stimulus discrimination is the third principle which is involved in the operation of shaping. The organism has tendency to differentiate or discriminate between the two stimuli or stimulus and give the response to the correct one is known as stimulus discrimination. D.F. सिकनर ने इस तरीके से पिजन का बिहेवियर ट्रेन किया गया था. आई मीन टू से यू पिजन का बिहेवियर इस तरीके से मॉडिफाई और मोल्ड किया गया था. पिजन knows how to discriminate between the green light from the red light. पिजन ने कंप्लीटली सीखा था जब ग्रीन लाइट होती है तब मुझे फूड मिलता है और जब रेड लाइट होती है तब मुझे फूड नहीं मिलता है. इस रेड लाइट और ग्रीन लाइट के दरमियान फर्क जानना, डिस्क्रिमिनेट करना. हाउ ग्रीन लाइट इज डिफरेंट फ्रॉम रेड लाइट. Such a behavior has learned by the pigeon as an organism. So here we can say that principle of discrimination simply means when the organism has tendency to discriminate or difference between two things, two stimulus, and give the correct response to right one. The process or principle is known as principle of discrimination. Discrimination is based on signal or cueing. यानी कि क्यू जब एक ऑर्गेनिज्म को मिलती है तो क्यू की बुनियाद पे या सिग्नल के बुनियाद पे एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंशिएट और डिस्क्रिमिनेट कर पाता है. डियर स्टूडेंट्स, किस तरीके से हम क्यू और सिग्नल का कंसेप्ट समझ सकते हैं. How cue and signal works in the discrimination. How it helps to the organism to differentiate between the two things and accordingly generate or produce the response. So far as operant conditioning theory is concerned, on the basis of cue or signal, the organism is able to make a differentiation. The organism is able to difference between the two stimulus and give the response accordingly. For example, अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करेंगे, the individual who is feeling very much hot, जिसे शदीद किस्म की गर्मी महसूस होती है, वो इंडिविजुअल रूम में बैठा है लेकिन रूम में फैन भी है और बल्ब्स भी है, लेकिन बल्ब्स जो है वो स्विच्ड ऑफ मोड में है. नाउ अब पंखा चलाने के लिए इंडिविजुअल को खड़ा होना है कि फिर स्विच ऑन करने हैं बोर्ड के और उसे पता चल जाएगा कि बिजली है कि नहीं. सो फार एज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज कंसर्न, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बिलीव्स वो बैठ के भी उसे पता चलता है कि बिजली है कि नहीं है, उसे खड़ा होने की जरूरत नहीं है. द इंडिविजुअल कैन कन्फर्म वेयर द इंडिविजुअल इज सीटिंग कि वेदर देयर इज इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. हाउ एंड विच थिंग बिकम्स देयर सिग्नल और क्यू. डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन द माइंड, बोर्ड में ऑलवेज इंडिकेटर लगा होता है. डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड में इंडिकेटर लगा होता है तो वो इंडिकेटर की लाइट जो है वो एक इंडिविजुअल के लिए क्यू और सिग्नल का काम करती है. अगर इंडिकेटर में लाइट जलती है इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज एंड दैट इंडिकेटर वर्क्स एज ए क्यू और सिग्नल. तो ये खड़ा हो जाएगा तो स्विच ऑन करेगा, फैन रोटेट हो जाएगा या फंक्शन स्टार्ट करेगा एंड द पर्सन विल गेट द कूल ब्रीजेस ऑफ एयर. अगर इंडिकेटर की लाइट नहीं जलती है इट ऑल्सो वर्क्स एज ए क्यू, तो उसे पता चल जाएगा कि इस वक्त बिजली नहीं है. आई हैव टू वेट टिल द इलेक्ट्रिसिटी विल कम एंड अकॉर्डिंगली आई विल ऑपरेट द बटन्स ऑफ द बोर्ड and get the cool breezes from the fan.
So this is known as principle of discrimination. How on the basis of cue or signal we try to difference between the two things and accordingly we are giving the responses. Dear students, अगर हम अब educational prism से देखेंगे, it is the responsibility of the teacher to make the children or learners familiar how to make a discrimination, how to make a differences between the two concepts or two things. For example, बच्चों को हम फ्रूट्स का कॉन्सेप्ट देते हैं. एप्पल भी फ्रूट है, मैंगो भी फ्रूट है एंड ऑरेंज भी फ्रूट है. ये सब फ्रूट्स है, तीनों के तीनों फ्रूट्स है. बड़े ये तीनों फ्रूट्स है, बट देयर लाइज द डिफरेंसेस. हाउ एप्पल इज डिफरेंट फ्रॉम द मैंगो, हाउ मैंगो इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑरेंज. तो इस तरीके की नॉलेज हमें बच्चों को देनी है, so that the children will completely learn how to find the differences among the similar things. किस तरीके से वो डिफरेंट फ्रूट्स में फर्क जानेंगे, किस तरीके से बच्चा लर्न कर पाएगा डिफरेंट ट्रीज और प्लांट्स में फर्क जानने की, डिफरेंट एनिमल्स में फर्क करने की. एंड दीज थिंग्स should be learned by the student or taught to the learner how to make a differences from one thing to the another thing.